हेलो फ्रेंड्स, मु सरोजिनी। आज आम पढ़ा वेस्टेड रे आसुवा इंग्लिश पेडागोजी आलोचना करवा। आउ तो समय नहीं, आज गोटे दिन केमिति इंग्लिश पेडागोजी क्लियर होबा से सब चलो देखा। कौन कही क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज कहीं कारण कौन ना इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएनओ। एटा ठीक अच्छी। इट इज एन इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज। एटा भी ठीक अच्छी। इट इज ए लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एटा भी ठीक अच्छी। ऑल दी एबव। तो कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी एबव। बुझिपार। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इज यूज्ड इन डेज। कौन हम ना पार्लियामेंट, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना जुडिशियरी, ना ऑल दी एबव। कौन हम से कही कौन इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पचार इज यूज्ड इन कौन पार्लियामेंट रे भी व्यवहार करा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन रे भी व्यवहार करा जाए, जुडिशियरी भी। ताने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी एबव। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कही इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स डेस। मल्टीकल्चरल कैरेक्टर, ना मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर, ना मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर, ना ऑल दी एबव। कौन हम जोटा कि ऑप्शन नंबर बी, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश लैंग्वेज हैज पोटेंशियलिटी फॉर पावरफुल कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स डेस। कौन ना रिच लिटरेचर, ना रिच वोकाबुलरी, ना इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ना लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न्स। कौन हम जोटा कि इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज बिकॉज कारण कौन ना ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। एटा तो भूल। ओनली बुक्स रिटेन बाय इंग्लिश ऑथर्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी। एटा कौन हम एटा भी भूल हम। कौन कही वन कैन एनरिच वन्स नॉलेज इन इंग्लिश। एटा भी भूल अच्छी। वन कैन हैव एक्सेस टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। कौन हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश acts एज ए लिंक लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कोटा ट्रू बोली को स्टेटमेंटा ट्रू बोली पचार। इट कनेक्ट्स दी कंट्रीज, ना इट कनेक्ट्स दी पीपुल, ना बोथ आर ट्रू, ना नन ऑफ दी एबव इज ट्रू। कौन हम जोटा कि इट कनेक्ट्स दी कंट्रीज, ये भी ठीक। इट कनेक्ट्स दी पीपुल, ये भी ठीक। तने कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर ट्रू। बुझिपार। देछि कौन इंग्लिश एज ए पावरफुल लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड मीडिया। देखिबा हेल्प्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन, ना एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ न्यूज, ना प्रोवाइड्स न्यूज ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट्स, ना ब्रिंग्स पीपल ऑफ वर्ल्ड टुगेदर। एटा तो केबे हबनी। प्रोवाइड्स न्यूज ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट्स, एटा भी हब नहीं। एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ न्यूज, ये भी हब नहीं। ताले कौन कही ना हेल्प्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बुझिपार। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन मोर इम्पोर्टेंट नाउ ड्यू टू पचारची कौन नॉलेज शेयरिंग, ना ग्लोबलाइजेशन, ना टेक्निकल एजुकेशन, ना इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। कौन हम जोटा कि ग्लोबलाइजेशन। बुझिपार। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश लैंग्वेज हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट इज नॉट रिजिड इन रोल्स। एटा हम ना हबनी। एटा तो हम नहीं। इट हैज इनबिल्ट स्ट्रक्चर, ये भी हम नहीं। द लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बुझिपार। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टडी ऑफ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वाज मेड कंपल्सरी बाय। कौन ना दी वर्ड्स डिस्पैच, देखिए कौन ना सर्जेंट रिपोर्ट, दी कौन कही ना दी मकलेज मिनिट्स, ना हार्टक कमिटी। कौटा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बुझिपार। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपल्सरी बिकॉज इट इज
the link language, na the library language, the language of trade and commerce, na all of the above. ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ କମ୍ପଲସରି ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ବୁଝିପାରିଲ? କହିଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଫ୍ରେଜ୍ ନା କ୍ଲଜ୍ ନା ସିଲେବଲ୍ ନା ୱାର୍ଡ, କୋଉଟା ହବ? ଯୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ରିଏଟ୍ସ exposure to the sounds of a language, କୋଉଟା ୟା ଭିତରୁ ହବ? listening ନା speaking ନା reading ନା writing, କୋଉଟା ହବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉଟା ସ୍କିପିଂ। କ'ଣ ହବ ନା ସ୍କିପିଂ, ସ୍ପିକିଂ। ତାହେଲେ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋଉଟା କୁହାଉଛି? ଶୁଣିବାକୁ ତ କେବେ କୁହାଯିବନି, ପଢ଼ିବାକୁ ତ କୁହାଯିବନି, ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯିବନି, ତାହେଲେ କୋଉଟା କୁହାଯିବ? ସ୍ପିକିଂକୁ କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଇନିସିଆଲି ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଥ୍ରୁ ଡେସ୍, କ'ଣ ହବ? ଟିଚିଂ ନା ଟ୍ୟୁଟରିଂ ନା ଇମିଟେସନ୍ ନା ପରସୁଏସନ୍, କୋଉଟା ହବ? ଯୋଉଟା କି ଇମିଟେସନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। Question number 4, encoding is related to dash, କ'ଣ ହବ? reading ନା writing ନା speaking ନା listening, encoding ଟା କ'ଣ କୋଉଟା ରିଲେଟ୍ କରୁଛି? ଯୋଉଟା କି ରାଇଟିଂ, ମନେ ରଖିବ, ଲେଖିବାଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି। ସେମିତି କ'ଣ କହିଛି? what it is when some portion of a sentence is altered with more degree of force, ଦେଇଛି କ'ଣ ନା pronunciation ନା intonation ନା pause ନା stress, କ'ଣ ହବ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ନା stress। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, stress। Question number 6, what is articulation related to? articulationଟା କୋଉଟା ରିଲେଟ୍ କରୁଛି? ସାଉଣ୍ଡ ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନା ଗ୍ରାଫିକ୍ ନା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, କୋଉଟାକୁ ଯାଉଛି? ରିଲେଟ୍ କୋଉଟାକୁ କରୁଛି? ନା ଯୋଉଟା କି ସାଉଣ୍ଡ। ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ କୋଉଟାକୁ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି? ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ନା ସାଉଣ୍ଡକୁ। ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଏନକୋଡ଼ିଂ କୋଉଟା ରିଲେଟ୍ କରୁଛି? ରାଇଟିଂକୁ, ଲେଖିବାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସ୍କିଲ୍, ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ? ଲିସନିଂ ନା ସ୍ପିକିଂ ନା ରିଡିଂ ନା ରାଇଟିଂ, କୋଉଟା ହବ? ଯୋଉଟା କି ରିଡିଂ, ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଲିସନିଂ implies comprehension, correct articulation leads to correct pronunciation, na reading is associated with phonic substance, na writing is a productive skill, कोड़ा हबो? जोटा कि reading is associated with phonic substance. Correct answer option number C. Question number 9, use of appropriate vocabulary is essential in the skills of dash, listening and speaking and writing na reading and writing na writing and listening, कोड़ा हबो? जोटा कि speaking and writing. Correct answer option number B. Question number 10, कौन कही? Which of the following is essential for meaningful reading with speed? कौन कही? I span ना I habit ना I contact ना visual perception, कोड़ा हबो? जोड़ा कि I span. Correct answer option number A. देइछि कोन ना decoding is essential while dash, कोन हबो? Listening ना speaking ना reading ना writing, जोटा कि reading. Correct answer option number C. आमे पूर्वरु कोन पढ़थिले? एनकोडिंग पढ़थिले, एबे कोन पढ़िबा ना डिकोडिंग. डिकोडिंग इज एसेंशियल व्हाइल कोटा ना रीडिंग पढ़िबाटा. क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी is important in the skills of dash, कोन पचाछि ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग
ନା ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ, ନା ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ନା ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ? କୋଉଟା ହବ? ଯୋଉଟା କି ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। Question number 13. Listener has no choice but to receive what the speaker says. Still, what is the reason for considering listening as an active skill? कौन कही? Listener listens to the speaker. Now, listener interprets and comprehends the speaker. Now, speaker initiates interaction. Now, listener responds to the speaker. कौन हबो? जोटा कि लिसनर इंटरप्रेट्स एंड कम्प्रेहेंड्स कौन ना दी स्पीकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज कंटिन्यूटी? देखिबा कोहेरेंस ना फ्लुएंसी ना एक्यूरेसी ना एक्जैक्टनेस कोडा हबो कंटिन्यूटी रे? जोटा कि कोहेरेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Question number 15. Interactive listening is dash. Listening and responding. Now listening for mode and tone. Now understanding the message. Now listening to learn pronunciation. कोटा हबो 15 नंबर जोटा कि listening and responding. Correct answer option number A. Question number 16. A test of listening is a test of dash. कौन हबो? प्रोडक्टिविटी ना रिसेप्टिविटी ना फिनोटिक्स ना हियरिंग एबिलिटी? कौन हबो? जोटा कि रिसेप्टिविटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेमती कौन कही? क्वेश्चन नंबर 17. रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय डैश. गिविंग वोकाबुलरी एक्सरसाइजेस, इम्प्रूविंग वन्स आई स्पैन, ना टीचिंग हाउ टू चंक, ना लार्जर आई स्पैन एंड प्रॉपर चंटिंग? कोडा हबो? जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लार्जर आई स्पैन एंड प्रॉपर चंटिंग। क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? Objectives are related to behavioral changes. Now, convert behavior can be seen when one speaks. Now, learning affects both convert and overt behavior. Now, language is learnt primarily for facing life contexts. कोटा हबो? जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट बिहेवियर कैन बी सीन व्हेन वन स्पीक्स। बुझिपाल? देछि कोन? क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? देछि कोन? ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्स. Now objectives are the short term goals. Now objectives can be tested. Now all the above statements. कोडा? ना एटा भी ठीक हबो। ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्स ये भी ठीक हबो। ऑब्जेक्टिव्स आर दी शॉर्ट टर्म गोल्स ये भी हबो। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी टेस्टेड ये भी हबो। तन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20. गिवन बिलो आर दी लैंग्वेज स्किल्स. व्हिच ऑफ दीज आर दी रिसेप्टिव स्किल्स? कौन हबो? लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग? कोटा कोटा हबो देख? लिसनिंग ये तो ठीक हबो। फर्स्ट है कौन ना लिसनिंग, तापर कौन करिवो? तापर कौन? तापर पढ़िबो रीडिंग। लिसनिंग आ रीडिंग ये दुटा होची रिसेप्टिव स्किल्स। या भीतर कोटा रिसेप्टिव स्किल बोली कहिची ना लिसनिंग आउ रीडिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोटा कोटा ना लिसनिंग आउ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर प्रोडक्टिव स्किल्स? कोटा या भीतर? लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना स्पीकिंग एंड रीडिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग ना रीडिंग एंड राइटिंग? कोटा हबो? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विथ ग्रामर?
କୋଉଟା ୟା ଭିତରୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ଫର୍ମ ନା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମ। କରେକ୍ଟ आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following indicates rise and fall of the tune? कौन हम प्रोनाउंसिएशन ना स्ट्रेस ना इंटोनेशन ना पॉज, कोड़ा हम जोटा कि इंटोनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेसिंग इज ए रिक्वायरमेंट इन दी स्किल ऑफ कौन ना लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग, कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 25, which type of reading can facilitate pronunciation? रीडिंग एलोड ना साइलेंट रीडिंग ना इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव, कोड़ा हम जोटा कि रीडिंग एलोड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन ना रीडिंग स्किल इम्प्रूव्स कौन हम ना लिसनिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना ऑल दी थ्री लैंग्वेज स्किल्स, कोड़ा हम जोटा कि ऑल दी थ्री लैंग्वेज स्किल्स माने लिसनिंग हम स्कीपिंग हम सॉरी स्पीकिंग हम ता सहित राइटिंग भी हम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following skills is initiated in traditional approach? रीडिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग ना लिसनिंग, कोड़ा हम जोटा कि रीडिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, one comprehends better while reading this aloud ना साइलेंटली ना एक्सटेंसिवली ना स्लोली, कोड़ा हम जोटा कि साइलेंटली। ऑप्शन नंबर बी। इन डेप्थ स्टडी इज इन कौन इंटेंडेड फॉर डेस मीनिंग मेकिंग ना इनफॉरमेशन गैदरिंग ना डिटेल्ड एनालिसिस ना लोकेटिंग फैक्ट्स, कोड़ा हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिटेल्ड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 30, सिमुलेशन and role play are used for improving the skill of desk listening na speaking na reading na writing, कोड़ा हम जोटा कि स्पीकिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रिवाइजिंग ए क्रिटिक इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेस्क स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग, कोड़ा हम जोटा कि राइटिंग। देखिए कौन ना ब्रेनस्टॉर्मिंग is more useful for desk listening ना speaking ना reading ना writing, कोड़ा जोटा कि writing। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33 रे कौन कही which of the following is not a requirement for the writing skill, कोड़ा sequencing ना paragraphing ना accent ना rearrangement, कोड़ा हम जोटा कि accent। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following statements is incorrect? Reading is a psycholinguistic guess game ना speaking is a collaborative activity ना attitude could be a barrier in listening ना creativity is important for writing, कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग is a collaborative activity। देखिए कौन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, देखिए कौन ना सफिशिएंट चैलेंज ना रिच लैंग्वेज हेरिटेज ना अपॉर्चुनिटीज फॉर बिकमिंग मल्टीलिंगुअल ना यूनिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, कोड़ा हम जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिटीज फॉर बिकमिंग मल्टीलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 2, ए चाइल्ड कैन मास्टर एन एक्सट्रीमली रोल governed language due to days exposure innate language learning ability ना constant practice ना intelligence, कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी innate language learning ability। देखिए कौन व्हाट इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द differently abled children not being able to speak, sign language ना body language। देखिए कौन व्हाट इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द differently abled children not being able to speak, कोड़ा हम ना साइन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन व्हाट लैंग्वेज स्किल्स डू दी चिल्ड्रेन लर्न बिफोर अटेंडिंग स्कूल, कौन हम ना लिसनिंग एंड रीडिंग ना रीडिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग, कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
क्वेश्चन नंबर 5 रे कोन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या भितर कोटा ट्रू नुह बोली सत्य नुह बोली पचारछि लिसनिंग और स्पीकिंग skills are oral कौन oral to oral now children initially develop oral to oral skill oral to oral skills can be developed without social environment children have potentiality for full linguistic abilities या भितर कोटा हबो कोटा सत्य नुह बोली पचारछि कोटा नुह जोटा कि oral रू कौन ना oral skill can be developed without social environment correct answer option number C this कौन a child easily learns home language due to days people around na persuasion by family members na teaching by the elders na in input rich environment या भितर कोटा हबो कहिछि कोन a child easily learns पिलाटा सहजरे कोन करिवो सिखि पारिवो होम लैंग्वेज घर लैंग्वेज टा ड्यू टू डेस कोडारू जोटा कि इनपुट रिच एनवायरनमेंट परिवेश कहिछि कोन व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इंटरैक्शन ना लिसनिंग ना एक्सपोजर ना प्रैक्टिस कोडा जोटा कि ऑप्शन नंबर सी एक्सपोजर क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हेल्प्स टू एक्वायर वन्स मदर टंग कोटा होम एनवायरनमेंट ना सोशल एनवायरनमेंट ना नेचुरल लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट ना ऑल ऑफ दिस जोटा कि ऑल ऑफ दिस सब गुड़ाक हम होम एनवायरनमेंट भी हम सोशल एनवायरनमेंट भी हम नेचुरल लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट भी हम क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट मेक्स ए चाइल्ड टू एक्वायर L1 विदाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कोटा ना एनकरेजिंग एनवायरनमेंट ना इनमेट्स टीचिंग L1 नो करेक्शन ऑफ एरर्स ना रिवार्ड कोटा हम जोटा कि नो करेक्शन ऑफ एरर्स ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रेन डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स बाय डेज ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना प्रैक्टिस एंड करेक्शन ना एक्सपोजर एंड ऑब्जर्वेशन कोटा हम जोटा कि ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए देछि कोन ना व्हाट डज लैंग्वेज हेल्प थिंकिंग ना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ना एक्सप्रेशन ना ऑल ऑफ दिस कोटा हम जोटा कि ऑल ऑफ दिस थिंकिंग भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज भी हम एक्सप्रेशन भी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देछि कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर L1 एक्विजिशन कोटा हम या भितरु listening capacity and speaking ability listening ability and interaction of na societal context na ability to hear and grasp language na imitation and practice कोटा हबो जोटा कि 12 नंबर बी कोन कहिछि व्हाट इज द स्टेज ऑफ L1 एक्विजिशन बिटवीन 2 to 3 years of age फ्री लैंग्वेज टू वर्ड लैंग्वेज ना सेंटेंस स्पीकिंग ना कौन ना बैबलिंग कोटा हम जोटा कि सेंटेंस स्पीकिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देछि कौन ना एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड एक्वायर oral to oral aspects of L1 completely कोटा को एस्टा जोटा कि ऑप्शन नंबर ए 5 years देछि कोन ना व्हाट इज द होलो फ्रेज स्टेज इन L1 प्रोड्यूसिंग वर्ड ना प्रोड्यूसिंग सिलेबल ना uttering two words ना सिनेक्टिक प्रोडक्शन कोटा हबो जोटा कि प्रोड्यूसिंग वर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहिछि कोन व्हाट मेक्स ए चाइल्ड फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग ए लैंग्वेज कोटा एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन ना अननोन लैंग्वेज स्ट्रक्चर ना एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ना कंपल्सन कोटा हबो जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट बुझी पारलो देछि कोन हाउ डज NCF 2005 व्यू इंग्लिश लैंग्वेज कौन हम ना ग्लोबल लैंग्वेज ना लिंक लैंग्वेज फॉर इंडिया ना कौन देछि ना लिंकेज टू वर्ल्ड ना ऑल ऑफ दिस कौन हम से कही NCF 2005 व्यू इंग्लिश लैंग्वेज टा जो कोटा हम ना ग्लोबल लैंग्वेज भी हम लिंक लैंग्वेज फॉर इंडिया एटा भी हम लिंकेज
टू वर्ल्ड एटा भी हम तान करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देछि कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस इन इंग्लिश टीचिंग सिचुएशन एज फॉर एनसीएफ 2005 कौन हम ना टीचर प्रोफिशिएंसी एंड मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स ना वेराइटी ऑफ एक्सपोजर एंड वेरिएशंस इन टीचिंग प्रोफिशिएंसी कोडा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि ऑप्शन नंबर बी देछि कोन ना व्हाट आर द गोल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एज फॉर एनसीएफ 2005 देछि कोन ना अटेनिंग बेसिक प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज एक्विजिशन ना लैंग्वेज एक्विजिशन एंड एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ना लैंग्वेज एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड एसिमिलेशन ना नॉलेज एक्विजिशन एंड एसिमिलेशन कौन हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड एसिमिलेशन बुझिपाल देछि कोन ना व्हाई डज इंग्लिश प्ले ए पाइवोटल रोल इन हायर एजुकेशन कौन कही ना यूजफुल फॉर comprehending reference materials na useful for research na used as medium of instruction na for all the above कौन हम ना for all the above देखि कोन which of the following is incorrect statement या भितरु कोडा भूल बोली कहिछि कोडा हबो barriers between English and other subjects need to be broken down तो ठीक अच्छी रीडिंग फेलियर इन मदर टंग अफेक्ट्स रीडिंग स्किल इन सेकेंड लैंग्वेज ये भी ठीक अच्छी हायर ऑर्डर लिंग्विस्टिक स्किल्स आर डेवलप्ड इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ओनली एटा कौन अच्छी भूल अच्छी जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देछि कोन नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इज ए प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग इनपुट रिच कंटेक्स्ट ना लैंग्वेज कंटेक्स्ट ना एक्सपोजर ना प्रैक्टिस कोडा हम जोटा कि इनपुट रिच कंटेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए देछि कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट कोडा हम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी ना टेक्स्ट बुक्स ना जर्नल्स ना क्लास लाइब्रेरी कोडा हम जोटा कि ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन कही which of the following indicate child centric approach या भीतर कोडा child centric approach को indicate करूची देखिबा टेक्स्ट बुक ना पैरेलल बुक्स ना लर्नर चोजन टेक्स्ट ना जर्नल कोडा हबो जोटा कि लर्नर चोजन टेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन कही व्हाट कुड बी द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज बिहाइंड पैरेलल बुक्स कोडा हबो टू एक्सपैंड नॉलेज ना टू मोटिवेट द लर्नर्स कौन हम ना टू डेवलप रीडिंग स्किल ना टू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग कोडा हम जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट डेवलप इंटरेस्ट फॉर रीडिंग कोडा ना जर्नल ना स्कूल लाइब्रेरी ना क्लास लाइब्रेरी ना टेक्स्ट बुक कोडा हम जोटा कि क्लास लाइब्रेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए कौन हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ड्यूरिंग एलिमेंटरी लेवल ऑफ कौन ना एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन हाउ मेनी इयर्स केते वर्ष जोटा कि 4 वर्ष करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ए टीचर टू रिमेन अपडेटेड टीचर ट्रेनिंग ना प्रोफेशनल अवेयरनेस ना ऑनसाइट सपोर्ट ना ऑल ऑफ दिस कोडा हम जोटा कि ऑनसाइट सपोर्ट कही कौन ना ए डायनामिक टीचर शुड have professional competency na have the ability to teach as for the situations and levels teach as for the identified objectives na have sufficient knowledge कौन हम जोटा कि ऑप्शन नंबर बी have the ability to teach as for the situations and levels question number 14 traditional evaluation as per NCF 2005 is कौन कही helpful in learning ना a test of language skills ना a test of content knowledge ना an impediment in learning कोडा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एन impediment in learning कौन कही एज फॉर NCF 2005 language evaluation should be tied to कौन अचीवमेंट ना पर्टिकुलर syllabi language proficiency ना learning objectives
कोड़ा हम जोटा कि ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी Which of the following is the correct statement with reference to NCF 2005 कौन कही ना language evaluation should focus on achievement ना evaluation has to be an enabling factor for learning na evaluation in language has to be pure test na approaches in evaluation need to be exclusive कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन कही ना इभालुएसन इज टू बी एन enabling factor for learning which of the following is related to the above statement कौन ना feedback ना motivation ना reward ना testing कोड़ा हम जोटा कि feedback करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए which of the following indicates for portfolio mode assessment ना evaluation ना best of the performances ना folio maintenance कोड़ा हम पोर्टफोलियो मोड इंडिकेट कौन करे जोटा बेस्ट ऑफ दी परफॉर्मेंसेस ऑप्शन नंबर कौन ना सी क्वेश्चन नंबर 19 इन व्हिच सिचुएशन डू दी चिल्ड्रेन लर्न बेटर कौ सिचुएशन ले लिनियर ना होलिस्टिक ना ऑटोमेटिक ना फ्रैगमेंटरी कोटारे जोटा कि होलिस्टिक ऑप्शन नंबर बी कौन कही व्हाट अल्टरनेटिव रोट does NCF 2005 suggest for the candidates who fail in English in class X secondary examination? X secondary माने कौन ना 12th कौन हम ऑप्शनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ना रिपीटिशन ऑफ टेस्ट ना प्रोविजन फॉर ग्रेस मार्क ना अलाउड टू पास इवन इफ वन फेल्स इन इंग्लिश कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देखिए कौन व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज स्किल कोड़ा ना इंडिविजुअल स्किल अप्रोच ना ऑटोमेटिक अप्रोच ना इंटीग्रेटेड अप्रोच ना कम्युनिकेटिव अप्रोच कोड़ा हम जोटा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कही कौन हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कौन ना लैंग्वेज टीचर ना पेरेंट एंड एल्डर्स ऑल दी सब्जेक्ट टीचर्स ना peers एंड फ्रेंड्स कोड़ा हम ना ऑल दी सब्जेक्ट टीचर्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन कोड़ा हम ना स्टूडेंट्स सिट साइलेंटली इन द क्लास ना स्टूडेंट्स व्हिस्पर इन द क्लास ना स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स आर अलाउड टू टॉक इन द क्लास कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स आर अलाउड कौन ना टू टॉक इन द क्लास क्वेश्चन कौन कही व्हाई इज स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टाट कहीं स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टाट देखिए इम्प्रूव्स लिसनिंग ना हेल्प्स एक्सपेंडिंग वोकाबुलरी ना डेभलप्स इमेजिनेशन ना ऑल ऑफ दिस कोड़ा हम जोटा कि ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज considered important by NCF 2005 for promoting reading culture कोड़ा ना ग्रुप वर्क ना ग्रुप रेसिटेशन ना इंडिविजुअलाइज्ड रीडिंग ना ग्रुप रीडिंग कोड़ा हम जोटा कि इंडिविजुअलाइज्ड रीडिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिस कौन वेयर डू वी फाइंड बुक कॉर्नर स्कूल लाइब्रेरी ना क्लासरूम ना कम्युनिटी लाइब्रेरी ना पब्लिक लाइब्रेरी कोड़ा हम जोटा कि क्लासरूम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिस कौन ना व्हाट obstructs a learner's writing skill lack of practice na expectation of correctness na dearth of ideas lack of appropriate training कोड़ा हवा जोटा कि expectation of correctness करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी expectation of कौन ना correctness कौन कौन which composition does NCF focus for improving writing skills among the learners कोड़ा ना स्टोरी राइटिंग प्रिसिस राइटिंग लेटर राइटिंग एसे राइटिंग कोड़ा हम जोटा कि एसे राइटिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी which of the following is primary and most important skill in essay writing कोड़ा हम आइडिया जनरेशन
ना इमाजिनेशन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ना हाउ टू बिगिन एंड एंड कोड हम जोटा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुछ कौन व्हाट फीलिंग डू दी लर्नर्स फ्रॉम दी advantaged बैकग्राउंड हैव इन क्लास कौन हम ना इनक्लूसिव बैकग्राउंड ना जॉयफुल एक्सपीरियंस ना फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट बाय दी टीचर ना फियरफुल एंड एप्रिहेंसिव कौटा हम जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुझिपार जो मानकर बुझिबारे प्रॉब्लम है से मते कमेंट रे जणाई पारे।